सब इंजीनियरिंग कर रहे तो मेरे को भी करने का, क्योंकि और कुछ ऑप्शंस नहीं है। मेरे को Hmm. फार्मूला याद नहीं होता। मैं एक बार फार्मूला चप्पल पे लिख के गया था। इन द सेकेंड ईयर आई थॉट कि फक इट, आई विल ड्रॉप आउट। I am the live example. I was not funny at all before IIT. But when I got into IIT, I got chance to explore the shit out of it. तो Yeah. वैसा कि ये क्यों बोल रहा हूँ मैं वैसे। I mean, first of all, thank you so much for taking the time out. You know, the way I have saved your number is Sumit Sketchbook IIT Bombay, right? So, usme there are so much talent already written in your name already, right? So, you do sketching, you do design, you do stand up, and you do YouTubing. So, इतने सारा creative चीज you do all together. How do you manage your time pursuing so many creative things? Yeah, so I think at one point it gave a lot of anxiety कि मेरे को लाइफ में करना क्या है। तो आई ट्राई टू फिगर आउट फ्रॉम द बैचलर्स टाइम्स कि ये करके देखते हैं, इसमें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई हैड ऑलवेज दैट जील कि मेरे को ये भी ट्राई करना है, ये भी ट्राई करना है, ग्राफिक डिजाइन भी करना है, स्केचिंग भी करनी है, ठीक है। बट क्योंकि मेरे को एक टाइम पे लगा कि द काइंड ऑफ पर्सनालिटी दैट आई हैव is not something that I can stick to one thing, and I have to Hmm. make something, right? So that's how the journey started, and that's how the name came up. The sketchbook. It's like Ah, putting all the things that you are exploring and putting that in a sketchbook. So all the got it. exploration goes to the sketchbook. So that's how the name came. Huh. Where were you putting this content out? Your sketching content initially? Sketching. Uh, Initially, it was on Instagram and Behance mostly. Okay, But mostly it's more of though sketch करता हूँ. I have stopped putting on sketch because I have started working on the content more of. got it, तो yeah, तो वो sketchbook पे ही रह जाता है. got it. Basically, your medium of expression changed now. Now Yeah, that yeah, there is more video exploration and things are going on. yeah. So, I was assuming like how would you manage time, but what I can also see is you have like transformed from sketch to now video person, and Yeah. also you're like juggling between design and stand up, right? Tell me a little bit about your stand up journey. How did you like think ki, ha, matlab, I need to go on to the stage? Because I was consuming some of your content. You mentioned that you are an introvert. Yeah. So how does an introvert decide to get onto the stage and present their bit to the audience? So it has been a good journey. I mean, stand up ke pehle there was a fear to face the camera. Hmm. Stand up ke pehle bhi, ठीक है. So when I was in IDC, uh, there I got to explore a lot of things. I got chance to act in a couple of short films. आई काइंड ऑफ गॉट टू नो द प्रोसेस कि सिनेमाटोग्राफी कैसे काम करता है, वीडियो एडिटिंग कैसे काम करता है। तो दैट प्रोसेस हेल्प मी इवॉल्व एंड टेक समथिंग आउट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। Hmm. तो आई यूज टू सेट अप इन माई रूम कैमरा और बैठ के कुछ आई विल रिकॉर्ड एंड शेयर। then when video editing came, cinematography came, short film came, I got the angle कि हाँ इसको ऐसे शूट करने से बेटर रहेगा, इसको ऐसे शूट करने से बेटर रहेगा। तो वो करते एक्सपेरिमेंट करते करते दैट फियर वेंट डाउन, ठीक है। Got it. तो एंड देन स्टैंड अप कम पैरेलली, लाइक अभी रिकॉर्ड क्या करना है। तो आई यूज टू डू, आई हैड ऑल्सो डन पोइट्री, आई हैड ऑल्सो डन सम राइटिंग एंड कुछ भी बोलने का हो गया वो क्लास में। तो वो एक्सप्लोरेशन रहता था। अब ऐसा नहीं कि पहले से ही मैं रॉक कर रहा हूँ, ठीक है। काफी फकअप हुए हैं। तो जैसे क्लास में इवन इन द डिजाइन आई वाज नॉट दैट ग्रेट बिकॉज आई आई कम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ठीक है। तो Hmm. फर्स्ट सेमेस्टर वेंट अप इन ब्रशिंग अप माई स्किल्स। अब मेरे स्केचिंग वॉज गुड बिकॉज आई हैड प्रैक्टिस्ड अ लॉट इन स्केचिंग पार्ट, बट माई मॉडलिंग part was quite fucked up. Like I did not have. I can I use the words? Yeah, yeah.
कोई ओके, मतलब कोई मना नहीं है भाई, कौन रोक रहा है? ठीक या है। तो आई वॉज बैड विथ मॉडलिंग, ठीक है। सो I got, like, my professor used to scold a lot because of that, but eventually the time passed by. I became quite decent, quite good at modeling as well. I skilled up in all the skills which was required for the design as a product designer. got it. But I was not great in UX. But again, I built up in time, and that parallelly from the IIT times, the stand-up thing came up. So then COVID came. Then I tried COVID के time पे in Jamshedpur. I'm from Jamshedpur, so I tried stand-up or poetry. So there was some competition was organized कि जिसमें poetry या storytelling या कुछ भी कर सकते हो. तो मैं बोला चलो जाके करते हैं, ऐसे मैं Hmm. बोर हो रहा हूँ घर पे तो जाके करते हैं. तो I did a stand-up, and the crowd I expected was not the crowd was there, ठीक है. Hmm. Hmm. तो उनको कॉमेडी नहीं समझता. तो आई एम लाइक ओके ठीक है, ये इस सेट के लिए दिस वाज नॉट द ऑडियंस राइट नहीं है। ऑडियंस, ठीक है. Hmm. विल कीप, बट अगेन दैट केम अप बिकॉज आई हैव डन stand up couple of times in IIT, and that went well because I had written that kind of set which can relate to that particular audience. Hmm. इंजीनियरिंग हो गया, डिजाइन हो गया, ऐसा. Got it. फिर when I came to Bangalore, Philips, so then here I did some of the events, stand up. Hmm. कभी जैसे रेड डॉट का इवेंट हो गया, then I did stand up. For I particularly wrote for that crowd and that moment. So Got that's it. how I got into writing and stand up and storytelling. Got it. I see a lot of parallel between design here. Like you almost designed for your audience, right? You Yes, yes. designed your entertainment piece for the audience. That's interesting. Maybe you could expand on it a little bit. Like, do you see a overlap of the design process and the craft of stand up? Yeah, I mean, that I kind of totally relate to. That's how I started doing stand up, because I I found see. that a lot of process that is involved in design is can be applied into stand up or anything that we do. ठीक है. Even in stand up क्या होता है कि the user is the audience, Hmm. and we observe them and try to make a joke. Even in design we talk about the white space, right? In Hmm. UX, white space. Yeah. In stand up, that same thing is the pause between the two Right. jokes to Right. make users or the audience feel that joke, right? To Right. experience that design what you did. So Right. both of the things are interrelated, and that interconnection, like the design, can be connected to life in general. जो भी म्यूजिक वी लिसन, राइट, अगर वाइट स्पेस नहीं होगा म्यूजिक में, जैसे अगर वो पॉज नहीं होगा म्यूजिक में बीट्स के बीच में, तो वो ठहराव। जावेद नौ- अख्तर वुड से इट इज ठहराव नहीं है अगर आपके ठहराव नहीं है अगर, म्यूजिक। या तो दैट इज जस्ट अ नॉइज. एक ही बिट बज रही है ना, राइट। तो दैट इज नॉइज. राइट। या सो देयर या हैज टू बी वाइट स्पेस इन एवरीथिंग एंड द या बैलेंस. Yeah, that makes completely perfect sense to me. Even for me, also, I'm also an introvert, and I also got onto stage through dance. तो मतलब बीटेक तो आई से यूजुअली कि बीटेक इन डांस मैंने कर दिया है rather than बीटेक in industrial design or anything. So for me also something similar also happened wherein I could draw those parallel between designing something versus choreographing something. Right, it pretty much felt the same thing. I also wanted to, since we are on the topic of stand up, right? Do you see that in your circle wherever you have been around? Which is, there are some people who are naturally funny, but there are some people who have become funny by just pure practice of the craft. I am the live example. I was not funny at all before IIT. I was I not see. funny at all. Okay. I was into, like, you can say I was in depression while doing my bachelor's. Okay. I was not a great engineer, not a good engineer. So even like bachelor's के time पे I started doing design.
fuck By the way, engineering. for the audience, when he's saying not a great engineer, he was in triple IT. So, so among the top 0.1%, he was not the great engineer. Yeah, continue. So yeah, I mean, so even there I was exploring design, but I Yeah. was not funny. I was not interacting a lot with people. I was super introvert. I I did not explore a lot during till that phase. Even school, I was, because I was kind of thin, so I used to get bullied a lot. ठीक है. I don't know what those people are doing right now who bullied me in my childhood, but yeah, I mean, that's what I'm saying. Like till but when I got into IIT, I got chance to explore the shit out of it. Like comedy, cultural fest, कुछ भी होगा मैं करूंगा ऐसा. ठीक है. So Got it. that 2 years of my life was like the life changing for me. Like I did short films, comedy, explore whatever I could. I did. So yeah, I mean, so that was like my journey. I was super introvert too. I transitioned myself to uh, craft the story out of me. Like I started with writing from IIT. I started writing. Like I how I would write. I would write on Instagram stories. Hmm. I did not used to write in the post, but in story I used to write a lot. I used to experiment a lot from like 2018 story mein, and like I used to try all the things. So I used to get comments like you are witty, you are quite funny, you should try stand up from Hmm. that time. I'm like ठीक है कुछ लोग बोल रहे हैं तो मेरे को ट्राई करना चाहिए and that kind of Yeah. build up time to time. तो Yeah. दैट वाज लाइक माई स्टार्टिंग पॉइंट कि मैं जो भी मेरे को थॉट आ रहा है मैं इंस्टाग्राम पे एज अ स्टोरी लिख दे रहा हूँ. ठीक है. Yeah. एंड देन आई यूज्ड टू सी कि क्या रिएक्शन आ रहा है. आई डिड नॉट रियली केयर अबाउट क्या रिएक्शन आ रहा है बट आई यूज्ड टू एंजॉय राइटिंग. ठीक है. आई वाज Yeah. that was like starting point. Then I started crafting that as a long story, how I can make into visual forms. So then I started with the short film, then the camera, then the vlog. So that went on. Yeah. Interesting. That's very interesting. Um, Wanted to talk about one point around again the same thing, which is like people who consume our content don't understand the power they have over us, which is if they provide a bit of positive validation to our craft, it is super useful for us, right? Especially when we Yeah. are starting off, right? Because we are experimenting, we don't know whether we are good at it or not. We have just tried something, it might just bomb, or three people might say good work, but those three people saying good work has so much more value than at this stage. If we go on to a stage and 300 people are clapping, may not have that level of value in terms of how it changes us, versus Yeah. those three people who in the beginning were there for us to clap. So Yeah. on that note, everybody please subscribe. So My channel as well. yeah, to his channel will that will be the first link uh, in the video. Yeah. So yeah, I mean, that is something that I have tried to tell people, that if you have friends who are trying something out, who are going out of the box, please try to support them when they are small. I mean, after they have achieved something, you celebrating them has very less meaning, right? You are just trying to then tell that, oh, this guy has succeeded, now I want to bask in the glory of his success a little bit, saying that I'm also related to him, I'm also coming from the same society that he was from. So I'll share a story. I have seen you since the childhood, that you were a shy kid, now you have become a big comic. तो भाई तब बोलना चाहिए था जब हम स्टार्ट कर रहे थे. तब तो बोले कि भाई क्या ही कर रहा है. There was no support, and suddenly when somebody like breaks through is when we see that in everything. It's not just with our thing, but we see that pretty much everywhere. That I is mean, interesting. that like something came in mind. Like so, when I was transitioning from writing to video, so there used to be some hate comments. ठीक है मेरे वीडियो पे कि अरे क्या बोल रहा है मतलब कॉमेडी पे मेरे लुक पे. ठीक है. दैट टाइम आई हैड लॉन्ग हेयर एंड वाज थिन काफी. ठीक है. तो some random
guy commented, and then I so I was building up with that comedy sense. Like I used to write, तो आई स्टार्टेड रोस्टिंग पीपल, ठीक है, कि अभी ऐसा रिप्लाई आएगा तो मैं तो मैं मौका नहीं छोड़ता हूँ, मैं रोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ तो हाँ दैट्स हाउ, तो दैट वेंट टू लाइक 15 कमेंट्स, लाइक 30 कमेंट्स, 15 उसका 15 मेरा, ठीक है। तो एक पोस्ट पे, एंड देन लाइक ऐसा ही चलता रहा, तो कौन रोस्ट में जीतता है, आई यूज टू कॉम्पीट रैंडम, हाँ लाइक हाँ आई हाँ। स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऐसा, कोविड चल रहा है तो यही करते हैं ऐसा। तो आई टुक दैट टाइम टू चैलेंज माई सेल्फ कि मतलब हाउ आर यू गोइंग टू टेक दिस सिचुएशन, ठीक है। Hmm. तो दैट वाज वन सिनेरियो, सो इवन नाउ, so either I will not get bothered up, or I will just roast in one first comment only, roast, and then फिर नहीं आएगा कमेंट ऐसा, Hmm. I roast. Yeah. It's Yeah, interesting. I yeah, actually look at when I scroll through Instagram. yeah. I look at the comments because those are more creative most of the time than the actual content, right? Yeah, So I feel not just comment. Even when I look at people's bio on Instagram, I feel like 100% of the people are creative in this world. Everybody has a some creative way to write their own short bio, or yeah, some way they just write very creative comments. So I just feel everyone has creativity. It's just that people don't channelize it into the right way. Sometimes it is not possible for them to make it a career. That is also fine. But yeah, I don't know, like, if everybody is funny. I don't think everybody is funny, but creativity is something that pretty much everybody has if they put in enough effort, enough time to it. I think they can hone that skill. So yeah. yeah, that is there. You mentioned about your childhood a little bit. Would like to know if there is an origin story of you being a multi potentialite, pursuing so many different creative things. If is there a link to your childhood, which is why uh, you are like so curious about so many things? Yeah, yeah. I know it. Uh, I am not sure if that is connected to that, because, but since you asked it, I think it's connected. So, बचपन में क्या था कि आई लाइक मेरे अराउंड जमशेदपुर में एवरीवन वाज डूइंग इंजीनियरिंग, तो आई डिड नॉट हैव एनी स्कोप टू एक्सप्लोर अदर फील्ड। सब इंजीनियरिंग कर रहे तो मेरे को भी करने का, ठीक है, क्योंकि और कुछ ऑप्शंस नहीं है अकॉर्डिंग टू हम्म। पेरेंट्स और जो एल्डर्स जो है। एक्सपोजर तो ही नहीं वही था बाकी चीजों का, हाँ। exposure नहीं था। Even there या was a painting class that I used to go. I left in 2 days क्योंकि सुबह बुला रहा था वो। तो that I tried, but that was not in scope because I always used to listen from like the elders कि भाई पढ़ाई कर ले, लाइफ में कुछ कर कर पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होएगा करके। हम्म तो दैट वाज माय लाइक इन माय हेड ऑल टाइम टिल 10th तक पढ़ ले सही से, उसके बाद 11th पढ़ ले सब सही हो जाएगा, 12th पढ़ ले सब सही हो जाएगा, आईआईटी कर ले सब सही हो जाएगा, ये चल रहा था पूरा। तो मैं बोला भाई कर ले रहा हूँ, कर ले रहा हूँ, कर ले रहा हूँ, कर लिया। फिर इंजीनियरिंग में फिर जब व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट बैक, लाइक आई फेल्ड अ लॉट, ठीक है। तो व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट बैक, तो फिर मेरे को चमका कि भाई मैं तो टॉपर था स्कूल में, अभी क्या हो गया, अभी मैं लाइक कभी मैं लाइफ में फेल नहीं हुआ, अभी मैं फर्स्ट में फेलियर आया मेरे को देखने को मिला, एंड आई क्राइड द शिट आउट ऑफ मी, ठीक है। एंड फॉर कपल ऑफ डेज आई वाज सैड, आई वाज अपसेट, बट देन लाइक देन आई यूज टू काउंटर इट, ठीक है, कि जैसे चलो हो सकता है मैंने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। अब होता है कि सब लोग लास्ट नाइट ही पढ़ते हैं ना एग्जाम के एक दिन पहले। हम्म। तो मैं बोला कि यार मेरे को मैं फेल हुआ, चलो एक बार मैं पूरा सेमेस्टर ही पढ़ के जाता हूँ। तो आई आई स्टडीड इन द होल समर वेकेशन, ठीक है। ओ बट भाई, क्या आई ही वेस्ट ऑफ टाइम था। या आई स्टडीड होल समर वेकेशन 2 मंथ, जो भी सिलेबस है मैं पढ़ रहा हूँ पहले से, कि एलएचएस को आरएचएस प्रूफ करना है, कैसे करना है वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। बट फिर जब मैं एग्जाम दिया तो मेरे को जीरो आया। तो मतलब फक, ये तो नहीं सोचा था मैं, ठीक है। इतना पढ़ लिया, मैथ्स ही पढ़ रहा था क्योंकि मैथ्स सबसे डिफिकल्ट था,
तो मेरे को मैथ्स में 4 बार जीरो आया, ठीक है, पढ़ने के जीरो बाद भी भी। आता है भाई, अच्छा। एंड क्लास का एवरेज वाज लाइक 10 12, कोई 25 में 20 भी स्कोर कर रहा है और मैं जीरो स्कोर कर रहा हूँ, आई वाज ओके। इन दैट जोन, ठीक है। बट आई डिड नॉट फेल इन मैथ बिकॉज आई टू एंड अप स्कोरिंग इन द एंड सेमेस्टर। ओके। बट उस टाइम पे मेरे को चमका कि अ, शायद ये मेरे लिए है ही नहीं, मेरे को हम्म। फॉर्मूला याद नहीं होता। मैं एक बार फॉर्मूला चप्पल पे लिख के गया था, तो फॉर्मूला नाइस। पूरा पैर पे छप गया। हाँ। तो मैं जब जो एग्जाम के 1 1.5 घंटे बाद मेरे को पता चला कि ये वाला फॉर्मूला मेरे को देखना क्या है, तो वो चप्पल से हाँ। मिट चुका है, क्योंकि पैर पे छप गया। तो फिर मैं फेल हो गया और क्या। नाइस। तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ ये, पर वहां पे पता चला होगा ना कि तुम चीटिंग अच्छा भी नहीं कर पाते हो। हाँ, तो फिर वही लाइक मेरे को चमका कि ये नहीं है मेरे लिए, और कुछ और करते। तब फिर मैं डिज़ाइन एक्सप्लोर करना चालू किया, लाइक स्टार्टिंग में। व्हाट वाज द क्वेश्चन, आई फॉरगॉट। क्वेश्चन क्वेश्चन था कि चाइल्डहुड और जो करेंटली कर रहे हो उसका कोई कनेक्शन है। तो अच्छा वी वर हाँ, फिर एक्सप्लोरिंग दैट, ऐसा कोई आंसर नहीं है, देर आर लाइक थिंग्स दैट यू आल्सो एक्सप्लोर व्हाइल यू टॉक। तो वैसा है तो कि वही यू like, आर तो सेइंग। या तो मतलब या वही इंजीनियरिंग तक पूरा प्रेशर रहा कि हाँ ये करना है, ये करना है। एंड देन इंजीनियरिंग में फिर पता चला, आई इन द सेकेंड ईयर आई थॉट कि फक इट, आई विल ड्रॉप आउट, ठीक है। तो देन आई टॉक टू माई पेरेंट्स कि मैं ड्रॉप आउट करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे को चमक नहीं रहा, मैं आर्मी ज्वाइन कर दूंगा एग्जाम देके, क्योंकि मेरे को देश का ये करना है, ठीक है। तो हाँ। मैं फिर बोला कि देश का सेवा कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, तेरे को आर्मी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, डिग्री कंप्लीट कर उसके बाद देखेंगे कुछ। हम्म। तो आई कुड नॉट ड्रॉप आउट, बट देन फिर आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग वहीं पे। सो हाँ, तो वहाँ पे था कि मतलब बचपन में वो एक्सपोजर नहीं मिला। देन आई स्टार्टेड क्रेविंग कि भाई इतनी चीज़ें हैं करने के लिए, और मैं अपनी लाइफ बस इंजीनियरिंग में ये कर रहा हूँ, ये दैट इज नॉट एंडिंग अप वेल। या तो when I got exposure, I like fuck it, I'll do whatever I can, like बट I'll do. डिडंट यू हैव लाइक bunch of clubs in your triple IT engineering Yeah, college as well? it was, there was. So I was attract like I joined design wala club. That's how I end up into design. ठीक है, तो आई यूज टू कोऑर्डिनेट डिजाइन एक्टिविटीज, कॉम्पिटिशन्स कॉलेज में, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक में। देर वॉज ऑल्सो पेंटिंग का, बट डांस का भी था, और अलग चीजें भी थी। म्यूजिक तो मेरे को पता था कि मैं म्यूजिक में बहुत खराब हूँ, तो उसमें नहीं होगा। Dance I tried for a time being. I tried, but that didn't work out. Design was there. I was quite active in design activities. ठीक है, तो पूरा थर्ड ईयर तक I used to coordinate and make competitions and all, Got कॉलेज it. लेवल पे, ठीक है। फिर there was a robotics challenge that I used to do with collaborating with other people. Got it. So yeah, I was active in that sense. Yeah. Yeah. बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर गिविंग मी अ किक जो मेरे को आईटी आके मिला। मूड इंडिगो Hmm. देखा फर्स्ट टाइम, इतना क्राउड आ रहा है, इतने सारी एक्टिविटीज हो रही है। सो मूड मूड आई वाज लाइक माय फर्स्ट किक कि फक, बहुत चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, मैं करता हूँ ऐसा। तो या Nice. Yeah. I think you are a very good inspiration for people who have so many things to explore, right? And you are somebody who are saying that in in the 6 years of your college you have like explored so many different things, right? And you didn't hesitate to choose a particular topic. You didn't overthink कि ये करेंगे ये लाइफ में काम आएगा नहीं आएगा, that like you never kind of thought about it. You just did it and then you tried to see whether it is sticking with you or not. And then that's how you found a few things that stuck with you, that few things that became your career, few things that are defining your personal brand right now. या So या that's a very
that's the right way to actually find passion. लोग बोलते हैं कि passion के पीछे भाग रहा हूँ, या passion, I think you need to नहीं, run, and then you'll hit passion while you are running on the you have to road to. explore other fields. Yeah. तभी पता चलेगा कि what things you are good at, what things you are not. ऐसा नहीं कि मैंने म्यूजिक ट्राई नहीं किया, मैंने ट्राई किया, एक दो हाँ. वीडियोस डाले थे, एंड फिर मैं ही सुन रहा हूँ तो मेरे को खराब लग रहा है, तो दैट्स हाउ आई एंड अप कि म्यूजिक मेरे लिए नहीं है. Yeah, I आई think ट्राई with गिटार एज with music and with different art forms, what वेल. I've seen is like there is taste and then there is skill, right? तो taste होता है कि भाई मुझे पता है अच्छा म्यूजिक क्या होता है, और मुझे पता है बुरा म्यूजिक क्या होता है. तो म्यूजिक में आई थिंक इट इज वेरी एविडेंट कि आप बेसुरा गाओगे, आपको खुद को आराम से पता चल जाए कि ठीक है भाई, ये तो मैं बहुत दूर हूँ. बट देर आर देन सो मेनी अदर थिंग्स, जैसे आई नो UI डिजाइन, UX डिजाइन, इसमें आई फील everybody with their first portfolio thinks that they have created the epic portfolio that they have done. फिर मास्टरपीस. 7 दिन बाद फिर 7 दिन बाद यू वुड बी लाइक क्रिंजिंग लुकिंग एट द सेम पोर्टफोलियो, क्योंकि आपका फिर टेस्ट बेटर हो जाता है, आपके स्किल के ऊपर चला जाता है. देन यू लुक एट योर ओन वर्क, देन यू वुड सी अरे क्या ही बनाया था. सो आई फील in some of these artistic lines, having a little bit of delusion also helps, which is you think that you have done well, तो देन यू स्टिक विद दैट आर्टिस्टिक परसूट, राइट? कि हाँ, या मतलब मैं आई एम डूइंग गुड, 3 लोगों ने ताली मारा है, ठीक है, आई कैन परस्यू इट. द मोमेंट, लाइक इमेजिन इफ आई वुड हैव डिजाइंड पोर्टफोलियो, लाइक कुछ तो डिजाइन किया होगा बचपन में, एंड देन द मोमेंट आई डिजाइन इट, आई वुड बी लाइक अरे क्या ही शिट बनाया है मैंने भाई, आई कांट डिजाइन. इफ आई वुड हैव लेबल्ड माई सेल्फ लाइक दैट, and I would have not got that delusion कि I'm a good designer, then probably I would have not pursued it. So I feel in some of these fields, having a little bit of delusion and not the truth sometimes helps us to continue pursuing the same path. Um, Interesting. I don't have any questions, but are there anything that you want to talk about? So maybe we can talk about design, because Yeah. that's the root cause of. Root cause of us meeting on this call. Yeah. Nice. So like design was not समथिंग लाइक, हाँ, एक एक दिन चमका कि मेरे को डिजाइन करना है, ऐसा नहीं हुआ. इट स्टार्टेड विथ ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. लाइक फोटोग्राफी वाज वन थिंग, ठीक है, जिसमें मैं विजुअल्स देख रहा हूँ, कैसे चीज़ें पर्सपेक्टिव में बैठ रही है, गोल्डन रेशियो में, वो सब चीज़ें एक टाइम पे आई. देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एडिटिंग, all that connected at one point. And then फिर बाद में we like I realize, or we realize कि uh, that's how life is also connected. Like we try to explore one field and then master it. ऐसा नहीं होता है. Like everything is interconnected, and when you sit down with your mind and then try to think or connect, then you realize कि ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है. स्टैंड अप Yeah. अपन अलग चीज से देख रहे हैं, फोटोग्राफी अलग चीज से देख रहे हैं, नहीं, सब कनेक्टेड है. विजुअल डिजाइन में विजुअल नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? अगर डिजाइन वीडियोग्राफी में अप्लाई नहीं करेंगे, जहाँ पे पॉज चाहिए वहां पे पॉज नहीं देंगे, तो नहीं सेंस करेगा. सेम इन म्यूजिक, सेम इन अदर क्राफ्ट एज वेल. Yeah. I mean, so all that aspect came into one point, and then you try to think that point, and you try to connect all the experience that you had, or the from the point you started exploring one of the skill, and then many, then try ki this. I mean, it's all the process. Even in content creation, maybe I try to be consistent. पहले I was just exploring कि मेरे को uh, जब भी टाइम मिल रहा है, I will try to make something because I'm just exploring. I'm just trying to put this art or story out. ठीक है, that was the goal. So I experiment that for a time being in different art forms, and then I realized कि अभी combine करते हैं, and then I have learned quite something. I have good knowledge. Then I just have to apply all the things that I learned in like past 2 years, and then I'll just apply that in a flow. We'll try to give a consistency
for the YouTube algorithm. Now, now they're defining that for a social media. Yeah, yeah, Like I have seen Instagram पे कि कंटेंट कुछ भी रहेगा, अगर आप कंसिस्टेंट हो देन कुछ भी चल जाता है. yeah. हाँ. That is true. But again, if you put the craft into it, then that will boost a lot. then Yeah. then that makes a sense to people, that makes sense to you. यार मेरे को क्रिंज रील्स नहीं बनाने, ये मैंने पहले सॉर्ट आउट कर लिया. ठीक है. देन आई Hmm. नॉट थिंक इन दैट एस्पेक्ट ओनली. Yeah. हाँ. अब जैसे बीइंग स्टैंड अप कॉमेडियन माइंड, मेरे दिमाग में मेरा दिमाग में खुराफाती चलता रहता है. लिंक्डइन पे इसके नीचे ये कमेंट कर दूं मैं. कभी कभी मैं Hmm. आई हैव कमेंटेड इन योर पोस्ट एज वेल समटाइम्स, आई गेस. Ha लाइक ha ha. समथिंग जो मेरे को फर्स्ट टाइम में चमका, दैट कुड बी फनी और समथिंग रिलेटेबल, मैं कर देता हूँ. लाइक किसी के भी रैंट, अंकुर वारिकी को पोस्ट पे कर दिया, कुछ भी कर देता हूँ. तो Yeah. वैसा कि ये क्यों बोल रहा हूँ मैं वैसे. You were saying that everything is connected, हाँ. or a consistency पता नहीं why it came, but one of the way you play the social media game is one skill set is consistency. So this is one of the skill. I think हम दोनों का वही है कि we think about something and then we go in flow and then we forget what what we started with. So for the people, there would be some people who would relate to it. So I'll keep that. I'll not cut these parts out, because there would be some people who would be like us, right? Which is कहीं से स्टार्ट किया, कहीं पे गए और फिर भूल गए भाई कहाँ से स्टार्ट किया था. एंड एक्चुअली आई हैव सीन इट विथ अ वेरी प्रोमिनेंट एडवर्टाइजिंग लेजेंड. नाम मैं भूल गया हूँ, आर से शायद उनका नाम है. ही ऑल्सो टॉक्स लाइक दैट कि ही वुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग. उनका बहुत पॉडकास्ट है, यू कांट बियर इट, हाँ. because because you would start with somewhere, you would go into something else and then you would give another example of something else altogether, और भाई खत्म ही नहीं होता. Like chain of thought just keeps on going from one thing to another and it doesn't stop. So for this, for people who can relate to it, they would relate to it. For people who can't understand us, then it's fine, it's okay. Slightly misfits here. So जस्ट ये सोचना, फॉर दोज पीपल ये सोचना कि कुछ तो औसम ही बोल दिया.